ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। Wherever you are focusing, please hear what others are saying about Guru Nanak Dev Ji. Dr. Iqbal Sahib, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। Here are some of the quotes from people who began their lives with different faiths, different religions. Their names are Muslim or Hindu or Christian or Sikh, but none of them remained Muslim. Or because Guru Nanak Dev Ji, he says, religions are beautiful. They have taken you up to here. Now let us all recognize that we all are humans. We all are his children. Can they? Dr. Iqbal, who was born in a Muslim family and very celebrated soul, he says, नेत्र बंद करके रखने जी ते सुनना सुनना ध्यान लाई रख। नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। He was born into a Muslim family. He says, the garden in which Guru Nanak Dev Ji sang the song of unicity by becoming a singing bird, means the planet, on earth planet. He says, that is my country. Guru Nanak Dev Ji is showing that the whole earth is one country and I belong to that country too. Guru Nanak Dev Ji is showing that the whole world is one garden of the divine, and he is singing songs of unicity, and I belong to that garden. Do you try? See, that's what we are, humans, ek parvar, one family, with common father, tum sanja sai baap hum. He says, the beautiful garden in which Guru Nanak Dev Ji sang or sings the song of unicity by becoming a singing bird, that is my country, that's my home. The whole world, Guru Nanak Dev Ji sang to the whole world. फिर श्री कृष्ण मोहन ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਏ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਨੋਸੈਂਟ Sri Krishna Mohan M.A. he writes, पहले पहले नानक ने ही
यक यहिति की शिक्षा दी, आपस में मिलकर रहने की कदरों कीमत समझाए। वो कहंदा कि अज भावें होर भी कोई गल करे, पर ये गल जिहड़ी शुरू कीती सी, ये गल जिथों उगी सी, वो गुरु नानक देव जी दे अंदरों उगी सी सब तो पहला। बाकियां ने ते सुन के कह रहे। Krishnamurti M.A. was born into a Hindu family, and he says Guru Nanak Dev Ji was the first one who ever uttered that the whole creation is one, the whole humanity is one, and it is him who taught us, who showed us the beauty of living together, loving each other, remaining compassionate towards each other. आपस में मिलकर रहने की कदरों कीमत समझाए. Please understand this. And then Sardar Darshan Singh Ji Duggal कहंदे, पीर ननकाना तेरी रूहे सदाकत को सलाम. पीर ननकाना, वो ननकाने तो उठ्या पीर गुरु. तेरी रूहे सदाकत को सलाम, तेरी सुच्ची आत्मा नू प्रणाम. He says, oh, the Guru who arose from Nankana Sahib, I salute most humbly to your holy soul, to your holy soul. जामदा परचम उल्फत तेरा लहराता है. How beautiful. कि तेरे बोल प्यारां दा निशान साहब हैं. तेरे बोल प्यारां दे निशान साहब चूल रहे हैं. इस चीज नू समझना. He says your utterances are the unfurled flags everywhere in the world. Your utterances are the high flags of pure love. Flags of pure love. ये जो उन्होंने निशान साहब नु ट्रांसलेट किया कि what is निशान साहब? Nishan Sahib is the flag of Guru Nanak Dev Ji's loving utterances. Loving utterances, flag, which is calling everyone from all directions. ये उन्हां दे प्यारां दे बोलां दा झंडा झुल रहा है, जिहड़ा कि चार चफेरियों सारियां नू वाजा मारे. And he says, Sadivi Chanda, he said, this flag is everlasting because it's the truth talking. Truth talking. Sri Ramakrishna Mujattar, ये कहंदे, Sri Ramakrishna Mujattar was born in a Hindu home. His name is Hindu, but he has become universal, and that's the meaning of the word Sikh, universal. And Shri Ramakrishna Ji says, एक ओंकार का सूरज निकला,
एक ओंकार का सूरज निकला, दूर हुआ अंधियारा. He says it so warmth and love releasing. Ek Onkar is a sun from which love and humility and truth is emanating, and the darkness has been dispelled. एक ओंकार का सूरज निकला, दूर हुआ अंधियारा. He says एक ओंकार is the sun of truth, emanating love, humility, divine light. नानक की बाणी सुनकर जाग उठा जग सर. Whosoever in the world listen to Guru Nanak Dev Ji, he woke up. He or she are meaningless here, he says. And he was like all these people were born in different faiths, and they became universal when they heard Guru Nanak Dev Ji. Because Guru Nanak Dev Ji takes us all, brings us all together and says, let's sit together, let's sing together, let's eat together. And Shri Mela Ram Wafa, he says, तुझे सारा जहां पैगंबर तौहीद कहता है. तेरी अजमत से हो सकता नहीं कोई भी इनकारी. These are not Sikh people, no. These are all people who are born in different faiths. And he is saying, तुझे सारा जहां पैगंबर तौहीद कहता है. तेनू सारी दुनिया पैगंबर आखदी है. वो पैगंबर जिसने दिखाया कि इते सारा रब दा नूर ही है, एक ही. He says the whole world is calling you the prophet of unicity, who is showing the world that it is all divine light, nothing else. It is all divine light. Humans are divine light, expressing itself in human form. He said the whole world is calling you the prophet of unicity. तुझे सारा जहां पैगंबर तौहीद कहता है. तेरी अजमत से हो सकता नहीं कोई भी इनकारी. No one can deny. How beautiful. ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. He says no one in the world can deny your unique greatness, unique grandiorness, and unique preeminence. Sri Son Lal Sahir, वो कहते वो इतने पाक हैं कि पाकीज़गी को नाज है उन पर. कि गुरु नानक देव जी इन्ने पुनीत हैं कि पुनीतता नू मान है गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ते कि किसी ने दुनिया नू दिखाया कि पाकीज़गी की हुंदी है. कि उन्होंने दुनिया नू दिखाया पाकीज़गी की हुंदी है, पुनीतता की हुंदी है. He says, and he was not Sikh, he says
O Guru Nanak, you are so holy that the holiness itself is proud of you. The holiness itself is proud of you, that at last somebody has shown the world what is holiness. And these are all like, it is, I find it laughable when we talk, like when you listen to Guru Nanak Dev Ji, and he makes all religions merge together into one, the religion of love, the religion of humility, the religion of compassion, the religion of kindness. He says, Taul Dharm Daya Ka Poot. He says, Dharm da matlab hai, ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। Guru Nanak Dev Ji says that you are a religious person if there is kindness in you, because kindness and love go hand in hand. He says you are a religious person if there is kindness in you, love in you, and if every deed of yours arises out of your inner kindness, then you are a religious person. He says, don't worry about naming the religion. How beautiful. Think about it. He says, don't worry about knowing which religion do you belong. He belongs to the religion of truth. वो इतने पाक हैं, he is so holy, कि पाकीज़गी को नाज है उस पर, पाकीज़गी को नाज है। किसी ने तो दुनिया में दिखाया कि पाकीज़गी की होती है। गल्लां नाल ते नहीं ना कोई पाकीज़ हो जाता। हाँ जी, आपां बहुत वड्डे भागां वाले हाँ, जिन्हां नूं उन्हां दे बचन सुनने मिले, उन्हां दे दर्शन उन्हां दे बचनां विचों हुंदे।